We've all used Watchout at some point. Would someone want to say what is there? Because Watchout is it's such a wide spectrum that we always used to use maybe just one small part or maybe a little larger part, but Watchout in totality it's a subject in itself. So would someone want to share what their experience with Watchout is, or what is Watchout according to them? Multiple screen, right? Anything else? Large canvas, it's basically a canvas you can play with completely. Nothing outputs. We can create pillars like this in Watchout. Pillars Resolume से भी कर सकते हैं, but Watchout कर ही सकता है, but only for pillars if you're using a Watchout, it's an overkill. You have multiple awards, you can better align it with the Watchout. Very true. This is one of the very important usages which we tend to miss. 8x6 का भी अगर छोटा सा स्क्रीन भी कर रहे हैं, but if the timeline is very very complex, then usage of Watchout, because उसका जो टाइमलाइन और टास्क बनता है इतना कॉम्प्लिकेटेड टास्क उसमें बना के हम रन कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल 2 लैपटॉप 3 लैपटॉप से अगर स्विचिंग करते बैठेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने ही वाला है. सो इट इज ऑल्सो मेजरली यूज टू रन टाइमलाइंस रादर देन ओनली डूइंग मल्टीपल स्क्रीन प्रेजेंटेशन. अगर इतना बड़ा स्क्रीन यूज नहीं किया तो Watchout इज वेस्टेड, वैसा नहीं है. What are the advantages? We can do a mix of feed, PPTs, logos and all of it. We can scroll text wherever we want. We can do a chroma key. We can work on multiple n number of layers, as many layers as we want. And as Vicky just shared, complex timelines run करने के लिए भी we can use this software. So what do we get out of this? We spoke about aspect ratio. So when we've got content, कुछ content 4:3 में, कुछ 16:9 में, कुछ actual screen का 6:1 में, 60:10 का screen. So when we've got a large screen and different kinds of aspect ratios, we are not sure because different people are coming with different kinds of ratios. Then we can use it and make the best of the screen to get the best results. Panoramic AVs, full screen templates use करना है, and as someone rightly said, complex multi-screen presentations. This is a simple screen setup. This is a 24:12 जो normal इससे भी कर सकते थे, but by using Watchout, what we got out of this, single screen तो कर ही सकते हैं. फिर vertical cropping live, अगर इसमें जो इसको pillar भी बना दिया, pillar में live feed को vertical crop करके ले लिया. Here we've got the presentation and here you've got the holding slides and the logos. So one single screen, multiple usage. Here this has been configured differently. यहाँ पे live feed right side पे आ रहा है, यहाँ left में आ रहा है, यहाँ logo आ गया, branding इस तरफ ले लिया, और सेंटर में लाइव फीड ले लिया, यहाँ ऊपर उसका नाम का सुपर इम्पोज आ गया, दोनों साइड हमने ब्रांडिंग कर ली, या सिंगल स्क्रीन. सो ऑल दीज काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन चेंज, बट वी नीड टू प्लान इट वेल. प्रीसेट्स बनाने पड़ेंगे, टास्क प्रॉपर बनाना पड़ेगा. लास्ट मिनट चालू शो में बोलेंगे अभी ये नहीं, ये करना है, तो नहीं होगा. इट नीड्स टू बी प्लान्ड एंड प्रोग्राम्ड वेल. We can display different kinds of shapes and sizes because उसमें geometry correction का भी option है. तो अगर हमको कोई square चीज़ को circular करना है तो वो भी हम कर सकते हैं. This is an 80:10 kind of screen. तो उतना अगर लंबा panoramic screen करना है तो उसका content चलाना है, run करना है, multiple images plan करनी है. So we can do all of that with this. A huge curved screen plus different kind of windows. You got your countdown timer, live feed, presentation. So we need to think and plan, and we had recently done this event through Milanj in Hyderabad. The same thing. So you have one single holding slide, or we can have different kinds of windows within the same image. This is the same 70 feet by 13 feet screen, which was done using Watchout. Also, as this shows, we can do live cropping. So here you see the gentleman. So that has been put on this standee. We can do live cropping. So normally your cameras will have a horizontal image, but through this you can crop it and place it wherever you want. So the pillars are also used effectively. So सिर्फ live feed दिखाने के लिए you don't need additional side screens. Here again, the fashion show, we are doing live cropping and putting the model on the pillars. The different cameras use, one camera, a different camera is there for the backdrop, and a separate camera is used for cropping. वरना main उसको करेंगे because that camera has to be dedicated for cropping and all of this. It can't be a part of the main mixer console, otherwise वो उसमें problem आ सकता है, because they will want a certain kind of image and the cropping will need the camera to be in a certain particular composition.
not only vertical cropping, we can also crop horizontally. Now here, this is a 30 by 10 screen. So, aspect ratio में कोई distortion नहीं, otherwise it would become a very skewed image. So here on a larger canvas, जैसे vertical cropping में side से हम image काटते हैं, for horizontal cropping ऊपर और नीचे से काट के only the center portion is put on the screen so that we can get the same image without any kind of distortion. ये तो समझ ले, but how do we make content and PPTs for Watchout? Because that becomes the biggest challenge. तो उसके लिए क्या करेंगे हम? So if you're making any kind of presentations, or we get a lot of stock footage. So stock footage could be in 4:3, 16:9, और उसमें से आपको बनाना है उसको panoramic. So what do we do? One simple thing is, अगर इतना बड़ा screen है, you have 3 or 4 images side by side to fill the screen. That is one option. If cropping is, or else we can crop the image. लेकिन crop image में you can't cut somebody's head. तो headroom जितना है उतना काट सकते हो. Main composition के बाद नीचे से काट सकते हो आप to some extent. But all the images, so जहाँ possible है हम crop करेंगे. अगर cropping possible नहीं, we'll use multiple images to form one panoramic screen. Even if you're doing a fresh shooting, and if we got to make an AV for a panoramic screen which is a 40 by 10 or a 60 by 12 or something, then shoot करते वक्त we'll need to plan. जो उसका व्यू फाइंडर में कैमरामैन को पहले बोलना पड़ेगा, this is the kind of ratio. So right there in the camera we'll have to mask. तो फिर वो shooting उसका उतने ही portion में आएगा. And then if you shoot it that way and you take it to the edit table, you won't have a problem cropping. But normal ratio में 16:9 में shoot कर लिया, फिर उसको panoramic अगर करना है 5:1, the editor पागल हो जाएगा लेकिन उतना क्रॉप नहीं कर पाएगा. तो अगर उस तरह का AVA कंटेंट बनाना है, इफ वी नो वो करना है, तो उस तरह शूट करो. मास्क उसको व्यू फाइंडर में ऐसे ही पैनोरामिक स्ट्रिप दिख रहा है तो वो उतने में ही शूट करेगा, एडिटिंग में बहुत इजी हो जाएगा. अगेन मेकिंग कंटेंट, अगर 19201080 3:1 करना है तो सीधा सीधा पिक्सल डिवाइड कर लो. और इफ इट इज 2304 फॉर 30 by 10 AV पिक्सल्स, सो 2304 डिवाइड बाई 3:1 का रेशियो है. अगर विड्थ हमारे पास फिक्स है तो विड्थ को 3 से डिवाइड कर दिया फॉर अ 3:1 स्क्रीन. दैट इज द काइंड ऑफ हाइट दैट विल गेट. So we need to understand what to crop, how to crop to make panoramic images. This is a simple template which is made. अगर 30 by 10 का स्क्रीन यूज करना है तो हम प्लान करेंगे कि हमको इसमें क्या क्या चलाना है, कैसे चलाना है. तो एक 3010 एक बहुत सिंपल साइज है, इसलिए वी आर टेकिंग, देयर इज नो, दिस साइज इज नॉट अ बेंचमार्क, बट सिंस दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड वी आर गोइंग अहेड विद दिस. सो 3010 स्क्रीन में 16:9 में हम सेंटर में पीपीटी चला रहे हैं. सो वी डिमार्केट 18 फीट फॉर दैट. एंड साइड में हमारे पास बच रहा है 6 फीट ऑन लेफ्ट एंड राइट, विच वी कैन यूज फॉर लाइव फीड, जो वर्टिकल क्रॉप करके ले सकते हैं, और लोगोज. लेकिन इस तरह से प्लान, वहाँ जाके वॉच आउट है ना देख लेंगे तो वो नहीं होता है. थोड़ा सा प्लानिंग करके चलेंगे. जो वॉच आउट ऑपरेटर को कंटेंट भी दे दिया, प्लानिंग कर लिया, देन थिंग्स विल बी मच इजियर. और सेम स्क्रीन वी हैव अ डिफरेंट ऑप्शन. अगर वाइड हॉल है, ज़्यादा दूर तक बैठे हैं, तो सिमिलरली लेफ्ट और राइट में आपने पीपीटी डाल दी, सेंटर में आप लोगो या लाइव फीड भी डाल सकते हो उसमें. बट चालू इवेंट में बोलेगे नहीं नहीं ऐसा नहीं अभी ऐसे चेंज करो, अरे ऐसा नहीं ये चेंज करो, वो नहीं हो सकता है. इट्स गॉट टू बी देयर इन द सिस्टम वे इन एडवांस. और होल्डिंग स्लाइड है, सीधा 3:1 में बना देंगे. 3:1 भी समझ में नहीं आ रहा है, पीपीटी में जाके गो इनटू कस्टम्स. इफ योर स्क्रीन इज 30 फीट बाई 10 फीट, आस्पेक्ट रेशियो इज 3:1, 30 by 10 फीट है. अब 30 इंच बाई 10 इंच का आप उसको टेम्पलेट बना लो, उसके अंदर पुट वॉट एवर कंटेंट लोगोज, it will not get stretched or distorted, it will come proper on the screen. हमको बोलते हैं कि नहीं आप पीपीटी का टेम्पलेट बना के दे दो. 3:1 का रेशियो पता चल गया, आप खुद एक टेम्पलेट बना सकते हो पीपीटी में एंड गिव इट टू द क्लाइंट. सर मैडम प्लीज मेक ऑल योर कंटेंट ऑन दिस एंड यू विल बी एबल टू शो देयर प्रेजेंटेशन ऑन द एंटायर वाइड स्क्रीन. फिर उतना क्रॉपिंग और मल्टीपल इमेजेस करने की जरूरत नहीं है. बट द कंटेंट हैज टू बी मेड इन द सेम एस्पेक्ट रेशियो, अदरवाइज वील हैव ऑल द रेशियो प्रॉब्लम्स. One is the wide screens. These days we've done events with absolutely panoramic screens, like your screens are 100 feet, 150 feet, 200 feet wide. So for a 200 feet by a 10 feet, क्या ratio होगा? Because your pixels are going 18,000 and 20,000 pixels. Editor पागल हो जाएगा, 20,000 पिक्सल में काम कैसे करेंगे? So for that the screen sizes, because system से चलेगा भी नहीं, configure भी नहीं होगा. Even your each output from the server will support our 1920 resolution का. So कितने आउटपुट हम यूज करेंगे? अगर आप 200 फीट का स्क्रीन कर रहे हैं तो कितने आउटपुट यूज होंगे, कितने सर्वर्स यूज होंगे,
how it is going to be configured, वो सब plan करना पड़ेगा. We just can't go with such a wide panoramic screen. किसी को भी बोल दिया कि चलो तुम आ जाओ तुम्हारा वॉच आउट लेके और ये चला लो. And even while making the content, we need to plan कितने, because editor cannot work at 18,000 pixels. So, okay, if he has a limitation of 3,000 pixels, तो 3,000 pixels के 6 विंडोज बनाएगा, 3,000 पिक्सल पे काम करेगा, सर्वर में डाल के फिर उसको ज्वाइन करके 18,000 पिक्सल्स चलेगा. So ambitious, we get ambitious. चलो हम लोग 200 फीट का 300 फीट का स्क्रीन बनाते हैं, स्क्रीन बना लेते हैं. फाइनली वी डोंट हैव कंटेंट, तो कंटेंट वही चल रहा है. फिर 20 बाय 10 20 फीट के सेम इमेज मल्टीप्लाई करते हैं 10 टाइम्स. Then all the resources are wasted. So, whenever we have a very wide screen, a very panoramic screen, then the first question should come to ourselves and the client, sir, इसमें क्या चलाएंगे हम? Are we spending or are we making content to justify the screen? Otherwise, let's not waste resources. या फिर what happens at most of the events, only holding slides or welcome slides are coming in that, बाकी सब 16:9 में ही आ रहा है. So अगर इतना बड़ा panoramic screen बना रहे हम 100 फीट का 200 फीट का, so spend that little extra and get proper content made in that ratio. Now, this is an example of a panoramic screen where this was a 300 feet by 10 feet. So how it was planned. So each block is planned, content is made in that way. उसको content को वो portion में cut किया है and then it is used. So content बनाने वाले को भी, once we have this kind of a plan, watch out technician will understand, the content developer will understand, and then it can be executed easily. फिर इसमें पूरे में चलाना है, you want to run the same content on 135 and repeat on 246, so things need to be planned accordingly. We'll just run a couple of examples of how panoramic screens look finally. अभी ये जो, so right from the drawing board to the actual venue, we'll see the video. So we need to plan and make content accordingly to justify the screen. Otherwise, simple PPT चलाने के लिए उसका कोई मतलब नहीं बन रहा है. This is the same. We are just running graphics on that same 220 by 10. So this was 90 feet left, 90 feet right, and 40 feet in the center. This was at the Conrad in Pune. We also need to understand what are the different files and formats which will run comfortably for Watchout. MP4, WMV, MPEG, MOV, all in H.264 compression is best suited for Watchout servers. Stills can be in JPEG, PSD, PNG. Watchout will also support 5.1. Just in case you got audio and content, the servers can support 5.1 sound as well. And also for 3D, we can have .avg files for mapping. This is possible only with the latest version 6.1 of the Watchout. Earlier versions were not supporting 3D. Praveen will show us. Praveen, you can have the mic as well. Praveen will give us a small example of how actual 3D rotation is done using the Watchout server. ओके अभी यहाँ पे सेंटर स्क्रीन में आपको वॉचआउट का टाइमलाइन दिख रहा है. ओके अभी वॉचआउट में क्या होता है कि ये जो राउंड शेप में दिख रहा है वो 3D फाइल है एक्चुअली. और
मेरे पास एक इमेज है यहाँ पे जो अर्थ पूरा अर्थ बता रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो 3D फाइल है यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट अगर वो ग्लोब को डाल रहे हैं तो वो ग्लोब पूरा उसको कैप्चर कर लेता है, और फिर हम लोग उसको रोटेशन करेंगे तो ये पूरा रोटेट होता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है पूरा जो ग्लोब रोटेट हो रहा है। तो वॉचआउट 6 में अभी ये पॉसिबल है कि हम लोग डायरेक्ट 3D फाइल भी उसमें इंपोर्ट करके प्ले कर सकते हैं। थैंक यू। Thank you, Praveen. Was this interesting? कुछ तालियां प्रवीण के लिए। He's been the man behind the entire workshop and all the content, and I'm only the face of this. He's put in so many days of hard work, Praveen, Altaf and our team to gather all of this, because as I mentioned, इसमें कोई एक कहीं नेट से डाउनलोड नहीं, कोई टेक्स्ट बुक कंटेंट नहीं, ये पूरा एक्सपीरियंस शेयर करके whatever we felt relevant सब compilation किया हुआ है इसका. And now coming to the last part, Watchout का एक major application ये भी है, we use it for projection mapping. So what happens for mapping is, for a smaller object we can use one projector, for a larger object we can use multiple projectors. So multiple projectors of different kinds of brightnesses to get the desired result. If we are mapping a pillar or something, then the projector can also be placed in a vertical position. जरूरी नहीं that horizontally रखना है उसको. Content can be made differently for foreground, subject and background. So content can also be made in different layers and run it through the server. It is always advisable to have a scaled down replica, because अगर कहीं भी प्रॉब्लम आ रहा है मेन इवेंट पे जाके, अगर हम लोग आउटडोर जा रहे हैं और अगर प्रॉपर स्केल डाउन रेप्लिका नहीं है तो लास्ट मिनट वी कैन हैव डिजास्टर्स. सो अगर स्केल डाउन रेप्लिका पे पूरा करके क्लाइंट को भी दिखा दिया, ट्रायल कर लिया, देन थिंग्स आर मच ईजियर. थोड़ा फाइट तो लास्ट में रहेगा, बट स्टिल वी आर एटलीस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दी वॉट एवर इज फोर्सिन. द लूमेंस कैन, इट्स अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, then even a 3000 or 5000 lumens is okay. तो जरूरी नहीं that अगर मैपिंग करना है तो 20,000 lumens कंपलसरी है. अभी यहाँ भी we got examples of mapping. We are using 3000 lumens, 5000 lumens, because these are all small surfaces. तो इसमें कहीं 20,000 lumens लाना जरूरी नहीं है. अदरवाइज एक ये दिमाग में बैठ गया है, मैपिंग है तो 20,000 lumens चाहिए, not required. But sufficient setup and testing time is required, especially for outdoor, because कुछ structural mapping कर रहे हैं तो दिन में काम नहीं कर पाएंगे, रात को ही करना पड़ेगा. So 2 days, 3 days planning, installation, running, testing, and then the show. So especially if you are doing outdoor large structural mappings, उतना backward time plan करना पड़ेगा. एक दिन पहले जाके structural mapping नहीं होता open में. Now we will see brief 2 or 3 mapping videos.
Emerson Climate Technologies touches millions of lives every day. Emerson, consider it solved.